See part number 5 of question number 1. How is the atmosphere divided on the basis of temperature? In its answer, we will describe the division of atmosphere on the basis of temperature. Now open page number 33. The answer of question number 5 starts from this line. The atmosphere has been divided into 4 layers according to temperature. According to temperature, the atmosphere is divided into 4 layers. These are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere and the thermosphere. The first one is the troposphere. The troposphere is the lower layer in which we live. This is the troposphere and this is the lower layer where the temperature decreases with an increase in height. ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है जब हाइट इंक्रीज करती है. द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, इट वेरीज विद लैटिट्यूड एंड द सीजन. द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज़ नॉट सेम, इट बिकम्स चेंज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड द सीजन. इट इज़ सेड द ट्रोपोस्फेयर इज़ थिकर इन द समर and thinner in the winter. On average, the temperature drop continues to a height of about 12 kilometers. 12 kilometers की height तक क्या होता रहता है, temperature decrease. The troposphere is very important layer for the Earth's surface. The troposphere is very important layer for the Earth's surface. Why? Because all the atmospheric processes take place in the troposphere. Which kind of atmospheric processes? The formation of clouds, the generation of wind and storms, etc. The troposphere constitutes the major part of the atmosphere by volume. The troposphere consists of the major part of the atmosphere according to volume. In the answer of question number 5, you will write about the troposphere from this line. The troposphere is the lower layer and it will end at about 12 kilometers. Now the next one is the stratosphere. The layer immediately above the troposphere is called the stratosphere. The layer which is above the troposphere is called the stratosphere. This layer is different from the troposphere. Stratosphere क्या होती है, different होती है troposphere से, because the temperature pattern is the opposite. The temperature increases with increasing height. Stratosphere में क्या होता है, temperature increase करता है जब height increase करती है. Troposphere में क्या होता था, temperature decrease करता था जब height increase करती थी. The upper limit of this layer is up to 50 kilometers. The stratosphere is the layer where ozone, the protective layer that shields life on Earth from sun's harmful ultraviolet radiation forms. Stratosphere में क्या होती है, ओजोन, जो हमें सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है. This is the layer where jet planes fly. Stratosphere वो लेयर है जहाँ पे जेट प्लेन्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. In the answer of question number 5, you will write about the stratosphere from this line. The layer immediately above and it will end at 50 kilometers. Now the next one is the mesosphere. The third layer is called the mesosphere. The third layer of the atmosphere is called the mesosphere. It extends from 50 to 80 kilometer above the Earth's surface. ये ज़मीन से कितनी बुलंदी पे होती है, 50 to 80 kilometers. In this layer, the temperature again decreases with increasing altitude. इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर दोबारा से गिरने लगता है जब हाइट इंक्रीज करती है. दिस इज़ द लेयर वेयर द मीटियोर्स फॉलिंग टू अर्थ बर्न अप लीविंग फायरी ट्रेल्स इन द स्काई. दिस इज़ द लेयर वेयर मीटियोर्स फॉलिंग टू अर्थ बर्न अप. व्हाट इज़ मीटियोर्स? अ मीटियोर इज़ अ स्पेस रॉक दैट हिट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ नोन एज शूटिंग स्टार्स. They leave bright streaks of light across the sky. In the answer of question number 5, you will write about the mesosphere from this line. The third layer is called and it will end at increasing altitude. The thermosphere. Beyond 80 kilometers, the topmost layer is called the thermosphere. Above 80 kilometers, the topmost layer is called the thermosphere. This layer contains only a tiny mass of atmosphere. In this layer, the temperature again rises. In the thermosphere, the temperature again rises. Temperature दोबारा से क्या करने लगता है, increase. Its exact height is not known, but approximately 10,000 kilometers is considered to be the upper limit. इसकी exact height कितनी, इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्या कंसिडर किया जाता है कि इसकी हाइट की अपर लिमिट जो है वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर्स है.
द टेम्परेचर इज़ अ वेरी हाई इन दिस लेयर। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई। इट कॉन्टीन्यूज़ टू राइज अप टू 1000 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कॉन्टीन्यूज़ टू राइज अप टू 1000 सेंटीग्रेड। In the answer of question number 5, you will write about the thermosphere from this line beyond 80 kilometers and it will end again rises। फिर उसके बाद आपने कहाँ से लिखना है, द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई से लेके 1000 सेंटीग्रेड तक।